Hello kids, welcome to today's maths class, and today we'll do algebraic expression. In class 8, we have already learned about the addition and subtraction of algebraic expression. In this chapter, we will study the multiplication, division and factorization of algebraic expression. But before proceeding further, let us recall some important terms related to algebraic expression. Polynomials. An algebraic expression in which involve variable have only positive exponent is called a polynomial. There are various types of polynomial. Algebraic expression having one term is called monomial. Mono means one. Example of monomial are 3x square y, 4xy and 2x. Algebraic expression having two terms, they are called binomial. Bi means two. Example of binomials are 3x square y plus 5x, 4xy minus 6y square and 2x minus 7. Algebraic expression having three terms are called trinomial. For example of trinomials are 3x square y plus 3xy plus 5 and 4xy plus 2x plus 2. Algebraic expression having one or more terms is called polynomial. In polynomial, power of x is a non-negative integer. हमेशा positive होगी जो power होगी. In polynomial, the variable cannot have negative or fraction exponent for any term. Examples of polynomial are 5x cube plus 2x, 3x square minus xy cube and 7 upon 2. Expression of the type 4xy plus 8 upon x square is not a polynomial because in 8 upon x square, for example 8 upon x minus 2, the power of x is negative. यहाँ पे क्या है, fraction में है, यहाँ पे power जो है negative है. So all these are not polynomial because जो power है वो क्या है, whole number नहीं है. Degree of polynomial. The highest power of the variable in a polynomial is called the degree of polynomial. For example, the degree of polynomial x minus 1, 2 minus 3x equals to minus 3x square plus 5x minus 2 is 2. Because variable की highest power क्या है, 2. So degree क्या हो जाएगी, 2. Degree of polynomial x square y cube minus 7xy cube plus 8xy plus 17 is 5. Because the power of x square and y cube is obtained by adding 2 and 3. Because x की highest power क्या है, 2 and y की 3. So add करेंगे तो 5. So degree हो जाएगी 5. Next is multiplication of monomial. For multiplication of monomial, we multiply constant as we multiply rational numbers and multiply the same variable by using the laws of exponent. Now we'll take an example. Multiply 3x square y by minus 5xy square. So multiply करना है 3x square y को minus 5xy square से. So first हम जो constant है 3 and 5 माइनस बाहर ले लिया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड वेरिएबल को x स्क्वायर एंड x y इंटू वाई स्क्वायर. x को एक साथ लिख देंगे and y को एक साथ. सो ये 3 इंटू 5 15 माइनस का हो जाएगा 15 x स्क्वायर एंड x क्यूब एंड y क्यूब. सो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 15 x क्यूब y क्यूब. क्लियर. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10A. Multiply 5x square y and 8y square x cube. So we have to multiply 5x square y को multiply करना है हमने 8y square x cube. So, first constant को करेंगे. So पहले हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 इंटू 8 दैट इज 40 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब. सो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 एंड वाई स्क्वायर वाई क्यूब. सो दिस द आंसर. क्लियर. You have to practice all the question of this exercise. We will move to next topic.
Next is multiplication of a monomial and a binomial. Monomial means expression having one term and binomial means expression having two terms. So to multiply a binomial by a monomial or vice versa, we use the distributive property of the multiplication. A multiplied by B plus C equals to A into B plus A into C, or B plus C multiplied by A, that is equals to B into A plus C into A. Now we will take an example. Multiply 7 upon 5x square and 8 upon 21x minus 3y. So we have to multiply 7 by 5x square into 8 upon 21x minus 3y. So what will we do? सबसे पहले हम 7 upon 5x square को 8 upon 21x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, विल पुट द साइन एंड देन हम इसको 3y से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये हो जाएगा 7 upon 5 इंटू 8 upon 21 x क्यूब माइनस 7 upon 5 इंटू 3 x स्क्वायर y. मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 8, ये कट जाएगा 3, so ये हो जाएगा 8 upon 15 x क्यूब माइनस 7 3s are 21 upon 5 x square y. So this is the answer. So this way we multiply a monomial by a binomial or a binomial by a monomial. Next, tips. Before multiplication of the binomial by a monomial, it is very convenient to firstly arrange the terms of the trinomial in ascending or descending order of expression of the terms that comes first in the alphabet. Next is exercise 10b. Find the product 8x cube multiplied by 5x minus 6y square. So what will do? Multiply करना है 8x cube को 5x minus 6y square से. So first हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इनको. सो फर्स्ट हो जाएगा 8 इंटू 5 और x क्यूब और x हो जाएगा x4. माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिखेंगे 8 इंटू 6 x क्यूब y स्क्वायर. 40 x की पावर 4 माइनस 48 x क्यूब y square. So this is the answer. Clear? You have to practice all the questions. Next is multiplication of a binomial and a trinomial. To multiply the binomial by a trinomial or vice versa, we use the following property. A plus B into C plus D plus E equals to A into C plus A into D plus A into E plus B into C plus B into D plus B into E. Now we'll take an example. Multiply 5x plus 3y and 4x minus 6y. So we have to multiply 5x plus 3y multiply by 4x minus 6y. So first 5x को हम इन दोनों से multiply करेंगे and then 3y को इन दोनों से. So 5x multiply by 4x minus 6y. Clear? Then 3y multiply by 4x minus 6y. ये हो जाएगा 5x into 4x 20x square minus 30xy plus 3y into 4x क्या हो जाएगा 12xy minus 18y square. So ये दोनों xy वाली सेम टर्म है.
माइनस का 30 है, प्लस का 12 है, ये हो जाएगा माइनस 18xy, 20x स्क्वायर माइनस 18xy माइनस 18y स्क्वायर. That is the answer. Next, tips. The product of monomial is always a monomial. The product of a monomial and a binomial is always a binomial. The product of monomial and a polynomial is always a polynomial. Next, exercise 10C. Multiply 2x minus y by 3x minus 5y. So multiply करना है 2x minus y, 3x minus 5y. So what will do? 2x को पहले हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे and then y को. So first write 2x multiply by 3x minus 5y. देन माइनस का साइन है, माइनस y को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 5y से. टू एक्स इंटू 3x हो जाएगा 6x स्क्वायर. 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से, तो ये हो जाएगा 10xy. देन माइनस y को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3xy. एंड देन माइनस y को माइनस 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5y स्क्वायर. नाउ ये दोनों टर्म सेम है, दोनों नेगेटिव हैं, सो ऐड देम एंड पुट नेगेटिव साइन. 13xy प्लस 5y square. This is the answer. So practice all the question of this exercise. Next is division of a monomial by a monomial. To divide a monomial by another monomial, follow these steps. Find the quotient of the numerical coefficient. Find the quotient of variable. Find the product of the result obtained in step 1 and 2. Now we'll take an example. Divide 15x square y square z square by 3xy. So solution क्या हो जाएगा? The quotient of numerical coefficient. Numerical क्या हो जाएंगे? 15 and 3. 15 divided by 3, that is 5. x square y square z square divided by xy. So ये x हो जाएगा, y यानी x y z square. Clear? Next is tips. Dividend equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. When the dividend and the divisor have the same sign, the quotient has plus sign. When the dividend and the divisor have the opposite sign, the quotient will have negative sign. Next is division of a polynomial by a monomial. To divide a polynomial by a monomial, follow these steps. Divide each term of the polynomial by a monomial, add all the quotient to get the result. We'll take an example. Divide 10a cube plus 12a square minus 6a by 2a. So, 3 terms है यहाँ पे. So, we'll divide it by 2a. So, what we'll do? We divide each term by 2a. 10a cube upon 2a, 12a cube upon 2a, minus 6a upon 2a. So, 10 divided by 2, that is 5. A cube divided by a, that is a square, plus 6a minus 3. So, answer is 5a square plus 6a minus 3. Next is division of a polynomial by a binomial. To divide the polynomial by a binomial, follow these steps. Arrange the term of the dividend and divisor in decreasing order in their degree. Divide the first terms of the dividend by divisor by multiplying any number in such a way that first terms may be cancelled.
Multiply all the terms of the divisor by the first terms of the quotient and subtract the result from the dividend. Consider the remainder of new dividend and proceed it till the degree of dividend may be less than the degree of divisor. Now we'll take an example. Divide 6y plus 5y cube minus 6y square minus 1 by 5y minus 1. Solution: arrange the dividend in decreasing order of degree. So इस तरीके से अरेंज कर लेंगे, सबसे हाईएस्ट, फिर उसके बाद इस तरीके से कम होती जाएगी डिग्री. फर्स्ट हाईएस्ट को लिखेंगे एंड देन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सो 5y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 1. नाउ वी स्टार्ट डिवाइडिंग. 5y माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है. सो फर्स्ट इज व्हाट? 5y क्यूब. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? हम 5y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे so that we get 5y cube? We will multiply by y square. So we'll write y square quotient. ये हो जाएगा माइनस 5y क्यूब, माइनस 1 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस y स्क्वायर. सो डिवीजन में हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं. तो यहाँ पे अगर माइनस साइन आएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. मीन्स ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया. ये एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे. माइनस 6y स्क्वायर में से हमें y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है. सो विल गेट माइनस 5y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 1. नेक्स्ट हमें लाना है माइनस 5y स्क्वायर. सो 5y को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 5y स्क्वायर आ जाए? सो मल्टीप्लाई विथ माइनस y. ये हो जाएगा माइनस 5y स्क्वायर प्लस y एंड माइनस 1. सो ये कैंसिल हो जाएंगे. 6y में से y सब्ट्रैक्ट होगा 5y माइनस 1. अगेन यहाँ पे क्या है? 5y माइनस 1. इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 5y माइनस 1. सो रिमाइंडर इज 0 एंड y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, दैट इज आवर क्वोशिएंट. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10D. डिवाइड 12x स्क्वायर y क्यूब बाय 3xy. सो हमें डिवाइड करना है 12x स्क्वायर y क्यूब को हमें डिवाइड करना है 3xy. 4 so answer is 4xy square. Clear? So you have to practice all the questions. Here we end the chapter. I hope you understand it well. Now you have to practice it.